नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे हम द adaptations to pregnancy. What are the changes in the mother when it comes to pregnancy? Okay, so firstly we'll talk about the hematological changes. That is, the blood volume increases and the hemoglobin mass also increases. That is, the oxygen carrying capacity of the blood, it should increase because there's a fetus inside. Then the plasma protein increases, globulin increases, sex hormone binding globulin increases, thyroid binding globulin increases, right? Normally, albumin and globulin ratio is 1.7 ratio 1, but in pregnancy it becomes equal. It is 1 by 1. Okay, because there is increase in the globulin, sex hormone binding globulin and thyroid binding globulin. Globulin is increasing, so the ratio becomes 1 ratio 1. Okay, now we have the blood volume is increased, like blood volume is increasing, oxygen carrying capacity is increasing, plasma protein is increasing. This all is for the fetus. Globulin is increases, but what is decreasing? Decreasing is the viscosity of the blood. It is hemodiluted. This is physiological anemia, right? And even though it is physiological anemia, but HP should not be less than 11 gram percent. If this is less than 11 gram percent, that means it is not physiological anemia. And secondly, hemoglobin concentration also decreases, plasma protein concentration also decreases, and albumin also decreases. So albumin is decreasing, globulin is increasing, प्लाज्मा प्रोटीन जौन सा है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है, पर उसकी जो सी कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है. ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ तो हो रहा है, पर उसकी जो सी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है. हीमोग्लोबिन का मास तो इंक्रीज़ हो रहा है, पर हीमोग्लोबिन की जो सी कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं दैट blood volume increases, viscosity decreases. Plasma protein increases, but concentration decreases. Hemoglobin mass increases, but concentration decreases. जो उसकी concentration है ना, concentration of blood, concentration of hemoglobin, concentration of plasma protein, वो decrease हो रही है. albumin decrease हो रहा है, globulin increase हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, और बस देख वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, प्रोटीन्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर डिक्रीज क्या हो रहा है? कंसनट्रेशन. किसकी? ब्लड की कंसनट्रेशन, हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन, प्लाज्मा प्रोटीन की कंसनट्रेशन, ये सब डिक्रीज हो रहा है. तो अगर कंसनट्रेशन के अलावा कोई शब्द है तो वो इंक्रीज हो रहा है. जो से WBCs की अगर हम बात करें तो WBCs जो से हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, WBCs जो से हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और जो से प्लेटलेट है वो डिक्रीज हो रहे हैं, बट नॉट लेस देन द नॉर्मल, दैट इज़ बिनाइन जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है, प्रेगनेंसी इज़ एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट. ओके, दैट मदर इज़ immuno deficient. I'll say that the immunity is not as strong as it was before pregnancy. So if we talk about the hormonal immunity, it increases, T helper 2 cell increases, but if we talk about the cell mediated immunity, it decreases, T helper cell 1 decreases. If we talk about Th1 shift to Th2 is not seen in pregnant women with PAH. Interleukin 4 increases, interleukin 10 increases, interleukin 13 increases, interleukin 2 decreases, tumor necrotic factor decreases, interferon alpha decreases. Right? So इसको तो थोड़ा रट्टा सा लगाना पड़ेगा. ओके, पहली बात तो ये याद रखनी है कि जौन सी हार्मोनल इम्यूनिटी TH2 इंक्रीज होगी, TH1 जौन सी डिक्रीज होगी, सेल मीडिएटेड TN1 डिक्रीज होगी. परंतु अगर वुमेन PIH है, दैट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है अगर वुमेन में, तो ये शिफ्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो TH2 के साथ इंटरल्यूकिन 4, 10 एंड 13 भी इंक्रीज़ होता है. ठीक है, एंड 4, 10 एंड 13 इंक्रीज़ होगा, पर डिक्रीज़ कौन सा होगा? इंटरल्यूकिन 1, TNF एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा. इंटरल्यूकिन 2, TNF एंड इंटरल्यूकिन अल्फ़ा जो सा वो डिक्रीज़ हो जाएगा,
And disease is mediated by Th1 improving pregnancy, Hashimoto thyroiditis, multiple sclerosis, and rheumatoid arthritis. जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे ESR, CRP, ठीक है, फैक्टर्स वो इंक्रीज़ करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, ESR और CRP भी इंक्रीज़ कर जाते हैं प्रेगनेंसी में, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होती है वो भी इंक्रीज़ करते हैं, ये हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है, पर फैक्टर 2 और 13 जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है क्लॉटिंग फैक्टर, एंड फैक्टर 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो वो भी डिक्रीज़ कर जाता है। अगर हम सीरम फिब्रिनोजन लेवल की बात करें, सीरम फिब्रिनोजन लेवल जो सा होता है वो इंक्रीज़ कर देता है, सीरम फिब्रिनोजन लेवल, फिब्रिनोजन का जो सा लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है, फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी दैट इज़ एंटीकोगुलेंट्स, प्रोटीन C एंड S वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, TPA इनहिबिटर जो सा होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस वजह से अगर इनहिबिटर इंक्रीज़ हो गया तो TPA डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उस वजह से प्लाज्मिन भी डिक्रीज़ हो जाता है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो सा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उस वजह से प्लाज्मिन भी कम हो जाएगा, तो फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी जो सी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। वाओ, एंड द स्प्लीन साइज इंक्रीजेज बाय 50%, दिस इज़ रिमार्केबल, मतलब जितना उसका साइज़ है उसका 50% और ऐड हो जाएगा, काफ़ी लार्ज हो जाता है फिर तो स्प्लीन प्रेगनेंसी में। Okay, so let me recall what all things I have just read. Firstly, what all things would decrease? First, in decrease would be the concentration, the hemoglobin concentration, the plasma protein concentration, and the blood concentration decrease हो जाएगा, और एक और प्लाज्मा प्रोटीन, और एक और चीज़ थी ब्लड हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन, यही है, ब्लड हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इंक्रीज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगी ब्लड के अंदर उसकी वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मास इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन जौन से वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, पर इफ़ वी टॉक अबाउट द कंसनट्रेशन दैट विल डिक्रीज़, देन वी टॉक अबाउट ग्लोबुलिन इंक्रीज़ होगा, एल्बुमिन डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाते हैं WBC जो से वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और WBC अगर इंक्रीज़ होगा और जो प्लेटलेट हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, फिर आगे हमने पढ़ा था कि TH2 जो सी है, TH2 इंक्रीज़ हो जाएंगे जो कि है हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और TH1 जो से वो डिक्रीज़ हो जाएंगे जो कि हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और अगर TH2 इंक्रीज़ नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो PH है, PIH, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरल्यूकिन कौन से थे, एक तो था 13, एक था 11 नहीं
4, 10 एंड 13, इंटरल्यूकिन 4, 10 एंड 13 जो से वो इंक्रीज होंगे, और डिक्रीज कौन से होंगे, 2 एंड TNF एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा। इंटरल्यूकिन 2 डिक्रीज होगा, TNF भी डिक्रीज होगा, और इंटरल्यूकिन अल्फ़ा जो सा इंटरल्यूकिन 2 और अल्फ़ा जो सा वो डिक्रीज होगा, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें थी। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे इंक्रीज होंगे एक्सेप्ट द क्लॉटिंग फैक्टर 2 एंड 11। 2 एंड 11 जो से वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बस वो डिक्रीज हो जाएंगे। अरे यार 2 एंड 11 नहीं, 2 तो ऊपर है, 11 एंड 13 सारे इंक्रीज हो जाएंगे, सिवाय 11 एंड 13 के वो डिक्रीज हो जाएंगे। अगर हम प्रेगनेंसी में उसके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स चेक करेंगे, जैसे ESR और CRP चेक करेंगे, तो देखेंगे कि वो भी इंक्रीज़ हुए हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स उसके, ठीक है। और जब हम जैसे अगर हम वो क्या था, TPA मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो सा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका इनहिबिटर जो सा होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर उसका इनहिबिटर इंक्रीज़ हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उस वजह से क्या हो जाएगा, जो प्लाज्मिन है, प्लाज्मिन डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रोटीन C जो सा होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रोटीन S जो सा होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन। Serum fibrinogen level increases. Fibrinolytic activity decreases. Anticoagulants decreases. Protein C decreases and protein S decreases. Then if we talk about the size of spleen is also decreased by 50%. Okay, the parameters which remain unchanged during pregnancy, ये भी question आ सकता, that is B lymphocyte, CD4, CD8, bleeding time and clotting time, antithrombin time, ठीक है। The changes in iron metabolism during pregnancy, all parameters of the iron metabolism total during pregnancy, total iron decreases, serum ferritin decreases except the serum transferrin level and total iron binding capacity वो increase हो जाते हैं। Total iron requirement during pregnancy is 1000 mg. Fetal iron requirement during pregnancy is 300 microgram. Daily requirement of iron during pregnancy is 4 to 6 mg per day. ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ी है कि सिर्फ 10% ऑफ द डाइटरी आयरन जो होता है वो ऑब्जॉर्व होता है। टू फुलफिल इन डाइट 40 to 60 mg ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड, कांट बी फुलफिल्ड बाय डाइट ओनली, ठीक है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम प्रेगनेंसी में आयरन दें।
Total iron requirement during pregnancy is 1000 microgram. Fetal iron requirement during pregnancy is 300 microgram. All parameters of iron metabolism decreases during pregnancy. Total iron decreases, serum ferritin decreases. Serum transferrin levels उनसे वो increase हो जाते, total iron binding capacity TIBC उनसे वो increase हो जाती है. ठीक है. सो सबसे पहले हमने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दैट इज़ बी लिम्फोसाइट, CD4, CD8, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, एंटी थ्रोम्बिन टाइम.
कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बी लिम्फोसाइट, CD4 CD8 रेशियो जो होती है वो अनरिमेन रहती है। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो अनरिमेन चेंज रहते हैं। ब्लीडिंग टाइम, काउंटिंग टाइम अनचेंज रहता है। एंटी थ्रोम्बिन टाइप जो होता है अनचेंज रहता है। सो कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट, CD4 CD8 रेशियो, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम एंड एंटी थ्रोम्बिन टाइम, BT CT CD4 CD8 रेशियो एंड द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। आयरन की अगर हम बात करें तो ऑल पैरामीटर्स ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म, जितने भी आयरन मेटाबॉलिज्म होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। टोटल आयरन कम हो जाता है, सीरम फेरेटिन कम हो जाता है, सीरम ट्रांसफेरिन के जो से लेवल होते हैं ट्रांसफेरिन का लेवल इंक्रीज होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पर जो सीरम ट्रांसफेरिन होता है वो कम हो जाता है और सीरम फेरेटिन टोटल आयरन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एटलीस्ट उसको 1000 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। ठीक है। और कम से कम फीटस को 300 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। और डेली रिक्वायरमेंट जो सी बॉडी की होती है वो होती है 4 to 6 mg पर डे। ठीक है। पर दैट इज़ 40 to 60 mg ऑफ आयरन रिक्वायर्ड, बट दिस कान बी फुलफिल्ड इन द डाइट वी टेकिंग। ठीक है। बिकॉज जनरली में सी वट एवर डाइट वी आर टेकिंग ओनली 10% ऑफ द डाइट इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड, राइट? सो if only 10% of the diet is absorbed, then what should we do? We should take supplementary iron. Iron supplementation is mandatory during the pregnancy. ठीक है। फिर आता है एनीमिया भारत प्रोग्राम, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग 60 mg of elemental iron plus 500 microgram of folic acid. Most common cause of anemia, iron and folic acid deficiency anemia, dimorphic anemia. तो कहते हैं कि इसमें आयरन अगर हम देते हैं तो कौन सा देते हैं? 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन देते हैं प्लस 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड देते हैं। ठीक है। 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। फिर वाई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया कौन सा होता है? आयरन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है। और इसको डायमॉर्फिक अनीमिया भी कहते हैं। ठीक है। और कब देते हैं? हम यूजुअली देते हैं 1 टैबलेट 4th month of pregnancy, ideally taken throughout the pregnancy but at least for 180 days after delivery. ठीक है। to replenish the iron stores. Iron salt is ferrous sulfate. Okay, so if you're talking about the folic acid we are giving in the beginning of pregnancy, 3 months before and 3 months after. But according to the Anemia Book Bharat, we have a tablet which is containing 60 mg of elemental iron and 500 microgram of folic acid. We are giving it from 4th month of pregnancy, and it is taken up till the last days of pregnancy, up till throughout the pregnancy, and should be taken 180 days before and 180 days after the delivery. It is for replenishment of the iron. And what is the iron salt we are using here? It is elemental iron, ferrous sulfate. And what is the government program? It is the Anemia Mukt Bharat. And what is the name of the medicine which is sold free? That is Mala D, Mala N. And Mala N is I think 2 rupees or 3 rupees, or Mala D, I'm just confused right now. So this is a sachet, and it would be having around, this is 1 2 3 4 5 6 7, it would be having 28 tablets, and 7 tablets would be of iron and ferrous fumarate. So Mala D and no, Mala D and Mala N, these are the contraceptive which are having the iron tablets during the days of menstruation. This is a like topic. ये कौन सा टॉपिक चल रहा था? ये कहाँ से आ गई बीच में? According to this program, folic acid starting from 4th month to prevent anemia, but to prevent the neural tubifection should be given preconceptually. Okay, according to this program, जो सा folic acid है for 4th month of pregnancy में with this elemental iron दिया जाता है, but as a gynecologist you are knowing that the lady is having any neural tube defect earlier in his history, so you should be giving the lady folic acid 3 months before and 3 months after. How much you should give? That is, you should give 4 mg
4 mg था मुझे याद है, और उसके बाद 400 माइक्रोग्राम 4 mg पर डे। यो उसके बाद है 400 माइक्रोग्राम पर डे। ओके, आगे हम आते हैं कि कौन से चेंजेस होते हैं उसके GIT सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जोन से होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती हैं ड्यूरिंग लेबर। चलो ये बेकार सा पॉइंट है। हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, GI रिफ्लक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं कि लोअर ओसिफिजियल स्फिंक्टर रिलैक्स रहे, वॉमिटिंग वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन भी रहे, हेमोरॉइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। And there we are seeing that it's very chances of vomiting during pregnancy. There's chances of morning sickness during reason the HCG level. There could be estrogen, progesterone, thyroxine, prolactin, placental GS leptin. These are the hormones which are basically causing the morning sickness or vomiting during pregnancy. Hyperemesis gravidarum, that is excessive vomiting plus significant weight loss, dehydration, alkalosis, hypokalemia, starvation, ketosis. Then problems is vitamin K deficiency, thrombin level decreases, coagulopathy, vitamin K embryopathy, intrauterine hemorrhage in fetus, preterm labor, abruptio placenta, preeclampsia.
अच्छा सॉरी मैं सारा दोबारा करती हूँ, ठीक है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये होती है जो उनसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, ठीक है, वो मेन हार्मोन होता है HCG, वो तब राइज कर रहा होता है, डबल कर रहा होता है, हर दूसरे दिन के बाद डबल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसके कारण बेसिकली वो ग्रो कर रहा होता है, इसलिए तुम्हें वॉमिटिंग ज़्यादा होती है और मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है। बट आफ्टर 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी वो रिजॉल्व आउट हो जाती है, जैसे जैसे HCG का लेवल थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। और बट एक कंडीशन होती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा को वॉमिटिंग होती है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, एल्कोलॉसिस हो जाता है, हाई पोटेशियम बहुत कम हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है, स्टार्व कर रही होती है वो बेचारी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में, ठीक है। और इन सब चीज़ों में तुम ये भी देख सकते हो, कभी कभी क्या होता है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि प्रोथ्रोम्बिन लेवल हमने डिक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है, कोगुलोपैथी है, विटामिन के, बस छोड़ो। फिर उसके बाद ठीक है, हो सकता है कि प्रीटर्म लेबर हो जाए, अब्रप्शो प्लेसेंटा हो जाए, प्री एक्लेम्पशिया हो जाए, ये सारे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की ही बातें हैं कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के कारण प्रीटर्म लेबर हो सकता है, अब्रप्शो प्लेसेंटा हो सकता है, प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है कि उस लेडी को थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाए, जिस वजह से उसको वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी में हमने 3 चीज़ें याद रखनी है, अटैक्सिया, कन्फ्यूजन एंड ओकुलर साइन। रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है कि HCG बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, प्लेसेंटोमेगैली हो जाती है, जैसे जैसे डायबिटीज़ हो तो उस पेशेंट में प्लेसेंटोमेगैली होगी। कोई मोलर प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, उसमें HCG तो बहुत ज़्यादा राइज करेगा, उसको बहुत उल्टी होंगी। फीमेल फीटस हो, उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, उसमें भी उल्टी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म हो, थायराइड बहुत ज़्यादा हो, उसके कारण भी हो जाता है। अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है जैसे मेरी जो है ना, उसके कारण भी हो सकता है। और अगर H. pylori की इन्फेक्शन है उसके कारण भी हो सकता है। तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि क्या क्या चीज़ें हो जाती है। सबसे पहले तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि जैसे जैसे उस बंदी को प्रेगनेंसी करेगी, सबसे पहले तो ये होता है कि उसे HCG लेवल कौन सा वो राइज़ करेगा, उस वजह से उसको मॉर्निंग सिकनेस होनी शुरू हो जाएगी, पर वो बाद में डिक्रीज़ हो जाती है। और 12 to 14 वीक से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको ऐसा रहता है। बाद में क्या होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसके बाद क्या होता है, कुछ लेडीज़ में क्या होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो जाता है। उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि अगर मदर डायबिटिक है, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, अगर प्लेसेंटोमेगैली है, ठीक है, अगर तो उसके वो फीमेल फीटस है, ठीक है, अगर उसकी थायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म है, ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी है, कोई उसको इन्फेक्शन होगी जैसे H. pylori की, या फिर वो ड्रग लेती है मेरी जो है ना, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है HCG बहुत ज़्यादा राइज करता है। अगर HCG बहुत ज़्यादा राइज करेगा उस वजह से क्या हो जाएगा, उसको एल्कोलॉसिस हो जाएगा, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है, बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, और स्टार्व हुई है, और हाइपोकेलीमिया हो जाएगा उसको, ठीक है, वेट लॉस उसका हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड होगी। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि देयर कुड बी एन इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस इन द फीटस ऑल्सो, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और देयर कुड बी प्रीटर्म लेबर, अब्रप्शो प्लासेंटा ऑल्सो एंड प्री एक्लेम्पशिया ऑल्सो, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं बेबी में, क्योंकि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम मतलब वो खुद ही इतनी वीक हो चुकी है और सब कुछ लूज आउट करी जा रही है, तो बेबी कैसे वो हेल्दी हो सकता है। फिर हो सकता है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई, चलो ठीक है, उसके बाद थायमिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि उस लेडी के अंदर अटैक्सिया आ सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, ओकुलर साइंस आ सकते हैं। ये सारी ocular signs, ataxia and confusion, these are the signs of Wernicke's encephalopathy, that is a thiamine deficiency, right? So how now we have known the
causes or the risk factors that could lead to it. If I am having a patient, I know that it is a twin pregnancy, it is a molar pregnancy, it is a placenta, she is diabetic and hyperthyroidism. So I see the risk factors for hyperemesis gravidarum, and she is vomiting and she is starved, weight loss is there even after pregnancy, she is not gaining weight, she is losing weight. So these are the proper signs. So how, the patient has come to me, how will I manage that? First of all, if it is a mild morning sickness, so I'll tell her it would be better if you take small frequent meals, and let's add vitamin B6 to your diet, and doxylamine and pyridoxine, diphenhydramine also. And if it is a moderate vomiting, like this is okay, this is happens with everyone because of the rise in hcg, but if it is like she has vomiting emitted, so I will tell, okay, now you have vomited much, I need to give an antiemetic to you. I will give you metoclopramide or ondansetron, या 4 दवाइयाँ लिख देती हूँ, एक दवाई लिखो जी देनी है, चारों के चारों थोड़ी दे देंगे उन्होंने मैं, promethazine, prochlorperazine. They should write what is actually given. MC क्वेश्चन आ जाना है कि which should I give, उन्होंने चारों ही लिखी हैं. Severe vomiting, IV fluid plus thiamine, IV metoclopramide, IV promethazine or IV ondansetron. Okay, then the third stage would be the patient has come to you with severe vomiting. And I can see literally the patient is dehydrated. First of all, I will provide IV fluids to the patient. Now I know that there could be vitamin K deficiency, there could be a thiamine deficiency, also wernicke encephalopathy, might be the patient in confusion or might develop that. So I will provide the patient with IV fluids plus thiamine. Then along with them, I will give IV injection of metoclopramide or promethazine or ondansetron, that is antiemetic. Then if the intractable vomiting is there, such a high level of that patient is not able to control only, then I will give parenteral nutrition to that girl. Okay, so much of vomiting. Next topic. Nice one. Respiratory changes in pregnancy. So uterus pushes the diaphragm by 4 centimeter. Okay, 4 centimeter is significant value in such packed structure. And transfer diameter of the chest increases by 2 centimeter. Circumference of the chest increases by 6 centimeter.
सो इसको भी ऊपर से पढ़ते हैं. आई डोंट थिंक तो इसमें से कोई क्वेश्चन आता है. सो पहले तो यूट्रस पुशेस द डायफ्राम बाय 4 सेंटीमीटर. रेजिडुअल वॉल्यूम एनसी वो डिक्रीज हो जाएगी. ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर. देन उसके बाद जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट होता है वो इंक्रीज होता है 6 सेंटीमीटर. ट्रांसवर्स डायमीटर जो उनका चेस्ट होता है, जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर. ठीक है. पुश अप बाय 4 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेस. चेस्ट का भी सर्कमफ्रेंस 6 सेंटीमीटर बढ़ जाता है यार. सबकॉस्टल एंगल इन नॉन प्रेग्नेंट is 68 degrees and in pregnant it is 103 degrees. Nice. Subcostal angle in non-pregnant 68, in pregnant 103. कौन सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ओके. क्योंकि लंग्स और ऊपर को कंप्रेस हो जाती है, उनसे रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो उनसे होती है वो इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. नाइस. एंड टोटल लंग कैपेसिटी जो उनसे होती है वो नॉर्मल या स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है. ओके. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि टाइडल वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज होती है. और जो उनसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होती है क्योंकि रिजर्व वॉल्यूम क्योंकि नीचे से पुश कर रहे हैं ऊपर को 4 सेंटीमीटर वो ऊपर आ गया डायफ्राम. तो ऑब्वियसली रिजर्व वॉल्यूम अब डिक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन को तो इफेक्ट नहीं करेंगे, पर रिजर्व वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम को कम कर देते हैं. तो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब पैरामीटर विच रिमेन नॉर्मल इन प्रेगनेंसी. कौन सा पैरामीटर नॉर्मल रहता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी बोला तो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगी. रेस्पिरेटरी रेट वही रहेगा, वाइटल कैपेसिटी फिर वही रहेगी. बस इतना याद रखना कि रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो गया, टाइडल वॉल्यूम जो से वो इंक्रीज हो गई, बाकी सब सेम ही है. रीनल चेंजेस की अगर हम बात करें तो किडनी का साइज 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है. और हाइड्रोयूरेटर इज प्रेजेंट मेनली ऑन द राइट साइड. ग्लाइकोसूरिया इन प्रेगनेंसी. प्रोटीन यूरिया अगर तो ग्लूकोज आ रहा है विद इन यूरिन तो दैट इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी. इट कुड हैपन. बट अगर प्रोटीन आ रहा है इन प्रेगनेंसी दैट इज़ नॉट नॉर्मल. प्रोटीन इन द यूरिन इज़ नॉट नॉर्मल. इट इज़ इंडिकेटेड दैट इज़ देयर इज PIH. Okay. And as you know the uterus is growing, there would be congestion of the bladder pressure would increase, urethral pressure would increase, and the length of urethra would increase. Nice. बेसिकली इतना याद रखना कि किडनी का साइज जो है 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा.
ब्लैडर को वो प्रेस कर रहा है तो ब्लैडर की कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लैडर की जो सी कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लैडर तो कंप्रेस हो ही जा रहा है ना बार बार। तो यूरेथ्रा का भी, ब्लैडर का भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यूरेथ्रा का भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली एक लेंथ ऑफ यूरेथ्रा जो सी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक डायलेटेशन हो जाता है यूरेटर्स का, रीनल पेल्विस का, कैलिक्सिस का, सारे डायलेट करते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में भी, यूरेटर में भी, किडनी में भी। तो उस वजह से वो 1 सेंटीमीटर किडनी डायलेट कर जाती है। एंड जौन सा GFR होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है बाई 50%। एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो जौन सा होता है, प्लाज्मा फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है बाई 50 to 75%. So these are the renal changes that are occurring. And if we talk about the total blood flow in pregnancy, तो blood flow भी obviously increase होगा, renal blood flow increase हो रहा है तो increase हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की जो सी क्लियरेंस है ना वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बट जो सा सीरम यूरिया है, सीरम यूरिक एसिड है एंड सीरम क्रिएटिनिन है, ऑब्वियसली अगर उनकी क्लियरेंस इंक्रीज हो रही है तो सीरम में उनका लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जो सी GFR है वो इंक्रीज हो रही है तो यूरिया कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, यूरिक एसिड सीरम के अंदर कम हो जाएगा और उनकी क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ ए गुड थिंग। टोटल ब्लड फ्लो जो सी प्रेगनेंसी में किडनी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, वैसे भी इंक्रीज होती है। If we talk about the liver, liver means normal and it could decrease in pregnancy. No, size remains normal. Liver enzymes decrease in pregnancy, except one enzyme, that is serum alkaline phosphatase. This is increasing. अगर हम बात करें तो सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज हो जाता है, एक कल्ला एंजाइम, बाकी सारे एंजाइम डिक्रीज होते हैं और लिवर का साइज नॉर्मल रहता है। एंड ये कहाँ से, ये इंक्रीज़ कैसे होता है, क्योंकि ये प्लासेंटा बनाता है। प्लासेंटा जो प्रेगनेंसी में बनेगा वो एक हीट स्टेबल एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को बनाता है, इस वजह से यही एंजाइम है जो इंक्रीज़ हो जाएगा, बाकी सभी एंजाइम प्रेगनेंसी में डिक्रीज़ हो जाते हैं। एंड अगर हम अब लीवर की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, कॉलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, दैट इज़ रेकरिंग जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको इक्टेरिस ग्रेविडेरियम भी कहते हैं क्योंकि इस प्रेगनेंसी में ही होता है। तो जॉन्डिस हो रहा है, प्रेगनेंसी में हो रहा है, यूजुअली ये 3rd ट्रिमेस्टर में देखा जाता है। ठीक है, एंड होता क्या है कि जो उनसे बाइल एसिड्स होते हैं ना, दे आर क्लियर्ड इनकम्प्लीटली एंड दे अक्यूमुलेट इन द प्लाज्मा। सो फर्स्टली द जो लेडी प्रेजेंट होगी वो कहेगी दिस वेयर इचिंग, आई एम फीलिंग इचिंग इन माई palms एंड सोल्स, एंड that would be the first symptom the lady would be presenting. And when then you can check for the serum bile acids and the jaundice level. If you are going for investigation, if you see the bile acid increase, right, and normally in the pregnancy you will see that the alkaline phosphate is increased, but you will see that SGOT and SGPT is either normal or slightly increased. So how can, so there's something fishy now that SGOT and SGPT is increased, because I said normally in pregnancy they should decrease, right? And when you check the bilirubin also, the bilirubin is also bilirubin is less than 4 to 5 gram.
Hmm. Pruritus. What is this? Why have they interjuggled it? Okay, so bilirubin is less than 4 to 5 pounds per cent. If we talk about the fetal complications, we can see that there could be preterm labor, there could be respiratory distress because the bile acids are increased, and because of that, the surfactant could decrease. If the surfactant is decreasing, obviously, baby would be not healthy in breathing, and there could be fetal distress that could lead to meconium aspiration syndrome. Yeah, there could be stillbirth. Yes, obstetric management. If I take, so I know that the baby, that the lady is having jaundice. I know if the lady is having jaundice in third trimester, it could lead to fetal distress to the baby because the bile acids are increasing, liver enzymes are increasing. So I know this is jaundice is affecting the baby. It could lead to respiratory distress. It could lead to meconium aspiration syndrome, and it could also lead to the death of the baby. Stillbirth could also be there. So what I'll do as a gynecologist, I'm looking that if the pregnancy has crossed 38 to 39 weeks of pregnancy, then I'll go for the induction of labor, the normal delivery. Let's induce it and let's just give birth to the baby. But if and the second option, I can also use the termination of pregnancy. I can go for any of the, I can either go for the induction of labor or termination of pregnancy, but I should not continue because it could result in stillbirth. It could lead to fetal distress. Okay, and in medical, I should do certain tests also to know the fetus is uh, uh, to know about the fetal distress, right? And after that, if the lady is, it's not about 38 weeks, it's like around 36 or 37 weeks, so I can give antihistaminics for pruritus. Obviously, antihistaminics are for pruritus, and um, chole, this is not the point. And what is the drug I'll give? I will give ursodeoxycholic acid. Okay, ursodeoxycholic acid, what it would do, it would decrease the bile acids. The bile acids which are present in the body, that are increased, because of that these things are happening. Ursodeoxycholic acid will help in the excretion of the bile acids. So this is the drug of choice of Icterus gravidarum, and most probably this cholestasis would recur, that 60 to 70%. And these patients, oral contraceptive pills are contraindicated. Okay, a patient of cholestatic jaundice that is recurring, you should not give oral contraceptive pills. If you are giving acute fatty liver or pregnancy, the most common cause of acute fatty liver in pregnancy, the second condition that could occur is acute fatty liver of pregnancy. Okay, what are the things that could result in acute fatty liver of pregnancy? First of all, that most common causes, if the lady is associated with recessively inherited mitochondrial abnormality of fatty acid oxidation, abnormal mutation on gene chromosome 2 codes for the LCA Lacard gene, long chain 3 hydroxyl acyl C, or what is all this? Okay, so this is something related to mother as well as the fetus. This is interesting. They say if you're talking about the acute fatty liver of pregnancy, then it is mostly because of the recessively inherited mitochondrial abnormality of fatty acid oxidation. जो उनसे fatty acids है ना, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और उसके लिए कोई जीन चाहिए होता है. पर कभी कभी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल की अबनॉर्मेलिटी के कारण फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के साथ कुछ हो जाता है, मतलब वो होती नहीं है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. तो कहते हैं कि अगर तुम मदर जो सी हेटेरोजाइगस है, ठीक है, कि एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, ठीक है, पर अब
उसके अंदर जीन तो है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, हेट्रोजाइगस म्यूटेशन है, देन इट इज़ ओके, स्टिल द अक्यूमुलेशन विल बी देयर बट विल बी लेस, ठीक है। बट अगर फीटस जौन सा है वो होमोजाइगस आ गया म्यूटेशन में, देन मदर के अंदर आएगा विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड की क्यूमुलेशन, और वो कर देगा एक्यूट फैटी एसिड ऑफ प्रेगनेंसी। बेसिकली वो कह रहा है कि होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल अबनॉर्मैलिटी होती है जो कि रिसेसिवली इनहेरिटेड होती है, रिसेसिवली इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल अबनॉर्मैलिटी ऑफ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। जैसे मदर हेटेरोजाइगस है, वन डोमिनेंट है वन रिसेसिव, पर अगर उसके तब तो उसके पास होगी, थोड़ी थोड़ी होगी पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं। पर अगर उसके पास जो फीटस है उसके पास दोनों रिसेसिव आ गई, वो होमोजाइगस होगा और वो एक्सप्रेस भी कर रहा है इस माइटोकॉन्ड्रियल अबनॉर्मैलिटी को, तो उस वजह से क्या होगा, अब जो उनसे फैटी एसिड्स है ना उनकी एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब वो माइटोकॉन्ड्रियल अबनॉर्मैलिटी प्रॉपरली हो रही है, तो उस चक्कर से एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड होने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, इन प्रेगनेंसी देयर वुड बी लिवर इंजरी एंड देयर वुड बी एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन, दैट इज कैपिलरी एंडोथेलियम बिकम लीकी, and there would be hemoconcentration, and third space accumulation of fluid would be there. मतलब सॉलिड कंपोनेंट है ना वो अंदर रहेगा एंड लिक्विड कंपोनेंट है वो बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की अक्यूमुलेशन के कारण क्या होगा, एक एंडोथेलियल सेल होता है उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी और एंडोथेलियम लीकी हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि अंदर तो सॉलिड कंपोनेंट रह जाएगा पर क्योंकि वो लीक आउट कर रहा है तो लिक्विड कंपोनेंट जौन सा होगा वो बाहर चला जाएगा। तो जो लिक्विड कंपोनेंट जब बाहर जाएगा तो फ्लूइड बाहर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो उस वजह से साइटिस होगा, उस वजह से पल्मनरी एडिमा होगा। पर क्योंकि जो सॉलिड कंपोनेंट है वो अंदर है, दैट हीमो कंसनट्रेशन अंदर हो जा रही है, उस वजह से क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर। क्यों, सीरम यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, क्रिटिनिन बढ़ेगा, उसके कारण यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो, जो फीटस को ब्लड फ्लो जा रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा और फीटल डेथ हो जाएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड जौन से होते हैं वो बेसिकली एक जीन माइटोकॉन्ड्रियल अबनॉर्मैलिटी होती है जो रिसेसिवली होती है, जिसने फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करानी होती है पर वो नहीं करा पाता। क्यों, क्योंकि मदर हेटेरोजाइगस है और फीटस होमोजाइगस है और उसमें अब एक्सप्रेस कर रहा है, और उस वजह से क्या होता है कि अक्यूमुलेशन हो जाती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की, उस वजह से एक्यूट लिवर इंजरी होगी और साथ साथ में एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड होगी। जब एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड होगी तो एंडोथेलियम को डैमेज करेगा, एंडोथेलियम जौन सा है वो लीकी हो जाएगा, लीकी हो जाएगा तो उससे लिक्विड बाहर जाएगा और सॉलिड कंपोनेंट अंदर आएगा। जब सॉलिड कंपोनेंट अंदर रहा तो हीमो कंसंट्रेशन होनी शुरू होगी, अगर हीमो कंसंट्रेशन होगी तो सीरम यूरिया बढ़ जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। उस दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, फीटस को ब्लड नहीं जाएगा, फीटल डेथ हो जाएगी। और अगर जो सी मदर है, मदर के अंदर क्या हो जाएगा, लिक्विड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, साइटिस हो जाएगा, पल्मनरी एडिमा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग इन द थर्ड ट्रिमेस्टर।
Okay, so when the patient will come to me, I'll see that the patient saying he's having nausea and vomiting in the third trimester. Nausea and vomiting in the third trimester is not a good sign, and the patient will say, I'm having okay. So 1 week later, I'll check the jaundice. I'll see that this teres is present, and in 50% of the cases, I'll check the BP. BP would be high. When I go for the urine examination, I see there is proteinuria that is not normal, that is indicative of PIH, and then I'll go for the liver enzymes and all that. So I'll see that the uric acid is increased, renal urea is increased, or creatinine is increased. Then I'll see that there is ascites and pulmonary edema. These things are present there. That means there is something wrong with the liver. There something happened with the liver. That is, liver injuries occurring inside the body. So when I'm seeing his LFT, I see that SGOT is increased, SGPT is increased, alkaline phosphate is increased, bilirubin is highly increased, more than 10. It is there, less than 10. Then bleeding time increase, clotting time increase, thrombin time is increased, and all clotting factors, serum fibrinogen, all that, right? And along with that, I see that there's also hypoglycemia and hypoalbuminemia. Albumin is also less and glucose is this is like okay. uh, uh, Acute fatty liver or pregnancy, there is hypoglycemia and hypoalbuminemia. Okay, serum, this is decreased. Okay, decrease in glucose and decrease in albumin is there. Serum uric acid and serum urea, serum creatinine is increased. And as a gynecologist, I know there is also another disease that is present there, that is called as HELP, in which there is liver injury. So as a gynecologist, I would recommend, this is the third stage, immediate termination of pregnancy should be there. I would suggest vaginal delivery if possible within 24 hours, or but I know there could be a fetal distress, fetus could die inside, and I know there is a heartbeat right now. I need to go for C-section. But before going for C-section, I need to look for the coagulopathy of the patient. And even if the patient recovers and the mother and the fetus are okay, but I see that after that the female could be suffering from diabetes insipidus and pancreatitis.
अगर हम एंडोक्राइन चेंजेस की बात करें प्रेगनेंसी में, तो क्या होता है कि जितने हार्मोन्स होते हैं वो सारे इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे सारे हार्मोन्स उनसे इंक्रीज़ होंगे, सिर्फ जो उनसे DHA और DHA सल्फेट होगा वो डिक्रीज़ हो रहा है इन प्रेगनेंसी एंडोक्राइन में। अगर हम पैंक्रियास की बात करें तो इंसुलिन सक्रीशन भी बढ़ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि सारे हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेप्ट जो प्रोजेस्ट्रॉन है, एक्सेप्ट लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देते हैं LH और FSH को। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन इंक्रीज है, इसलिए इंटीरियर पिट्यूटरी के बाकी सारे हार्मोन इंक्रीज हैं सिवाय LH और FSH के, जो इस टाइम पे थोड़े से डिक्रीज लेवल पे हैं, ठीक है। एंड द साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर की हम बात करें तो 135 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम अगर एंडोक्राइन चेंजेस की बात करें तो 3 ही हार्मोन्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड जिसमें इंक्रीज होते हैं सिवाय DHA सल्फेट और DHA के, क्योंकि वो अपने आप जो फीटल एड्रीनल ग्लैंड होता है वो बनाता है और आगे ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। जो पैंक्रियास होता है वो इंसुलिन सक्रीशन को इंक्रीज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ऑल हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी उसको इंक्रीज करता है, सिवाय कौन से 2 हार्मोन्स को, FSH एंड LH। क्यों? क्योंकि FSH और LH नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होते हैं अंडर द ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, और क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है इसलिए FSH और LH जो है वो डिक्रीज रहेगा, ठीक है। व्हाट आर द चेंजेस इन थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि साइज ऑफ थायराइड इज इंक्रीज्ड। थायराइड का साइज है वो इंक्रीज है, जो सा लेवल ऑफ changes in thyroid gland during pregnancy, size of thyroid is increased, level of HCG is also increased. Alpha subunit of HCG is similar to the level of TSH, that is T3 and T4 level जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अल्फा सब यूनिट ऑफ HCG is similar to the level of TSH. अगर हम साइज़ ऑफ थायराइड की बात करें तो साइज़ ऑफ थायराइड वो इंक्रीज़ होगा। अगर हम लेवल ऑफ HCG की बात करें, HCG हमें पता है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर से ही HCG डे 8 से HCG बनना शुरू हो जाता है और वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये भी चीज़ हमें पता है कि कौन सा अल्फ़ा सब यूनिट होता है वो LH FSH और TSH तीनों से सिमिलर होता है, कलर TSH से नहीं सिमिलर होता। अल्फ़ा सब यूनिट ऑफ HCG सिमिलर टू TSH LH एंड FSH, ठीक है। और जब हम तो क्योंकि HCG इंक्रीज़ हो रहा है तो उस वजह से T3 T4 भी इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब थोड़ी सी हाइपर थायरॉइडिज्म आनी शुरू हो जाती है। एंड थायराइड का साइज़ भी जो सा होता है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जो से थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है, हमें पता है कि जो सी प्रेगनेंसी में ग्लोबुलिन होती है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ फ्री T3 एंड फ्री T4 जो से होती है वो नॉर्मल रहती है। परंतु अगर हम बात करें TSH की, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो नॉर्मल रहता है और स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं आता, एंटीरियर पिट्यूटरी तो उन्होंने कहा सारे इंक्रीज होते हैं। और अगर हम बात करें आयोडीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है। डेली रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है? 250 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वो कहते हैं कि वैसे जो से होती है ना, T3 T4 इंक्रीज होगा, TSH प्रेगनेंसी में थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, पर हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है प्रेगनेंसी में। उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सी डेवलप्ड कंट्री, उसमें हाइशोमोटो थायराइडाइटिस जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है।
तो अगर तो वो डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें आएगी आयोडीन की डेफिशिएंसी, और अगर वो डेवलप्ड कंट्री है तो वो आएगी हाशिमोटो थायराइडाइटिस. एंड द डोज ऑफ थायरोक्सिन शुड बी इंक्रीज्ड बाय 30 to 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जौन सा अगर किसी बंदे को ऑलरेडी थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको अपनी थायरोक्सिन इंक्रीज़ कर लेनी चाहिए डोज एज बाय 30 to 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द CNS चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज़, पहले तो वो थायराइड की बात कर लेते हैं. थायराइड में क्या होगा, थायराइड का साइज भी इंक्रीज़ हो जाएगा, T3 T4 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उनकी TSH होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी. कभी कभी किसी बंदों में हो सकता है कि आयोडीन की कमी आ जाए, और आयोडीन की कमी इसलिए आती है क्योंकि आयोडीन की एक्सक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाती है. जब आयोडीन की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होती है तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है. और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज 250 माइक्रोग्राम पर डे. 250 माइक्रोग्राम पर डे इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन. एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hypothyroidism during pregnancy in developing countries iodine deficiency, and in developed countries Hashimoto thyroiditis. And the dose of thyroxine should be increased by 30 to 50% during pregnancy. एंड CNS चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें आता है कि पहले तो ये है कि जो साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, स्पेशली द इंटीरियर लोब. जो जिस अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो उसका इंटीरियर लोब 135% इंक्रीज हो जाता है. दैट द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज इंक्रीज्ड बाय 135%. अगर हम शीशान सिंड्रोम की बात करें, दैट इज उस pituitary anterior lobe blood volume decreases and necrosis हो जाती है. Anterior lobe increases, blood volume decreases and there is necrosis. अब अगर हम बात करते हैं CNS चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, तो साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेज बाय 135%. ठीक है, और इसको एक होता है शीहान सिंड्रोम. उसमें क्या होता है कि पोस्टमार्टम नेक्रोसिस ऑफ द इंटीरियर
तो हम बात कर रहे थे CNS चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की. इसमें क्या होता है कि साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, especially the anterior lobe, it increases by 135%, and Sheehan syndrome, that is pituitary anterior lobe increases and blood volume decreases, that leads to necrosis. The postpartum necrosis of anterior pituitary due to excessive blood loss, that is postpartum hemorrhage. Smoking is not related to the weight gain in pregnancy. And okay, so what happens? The size of pituitary gland increases during pregnancy. There is a syndrome that is known as Sheehan syndrome. During pregnancy, what happens? The anterior lobe of the pituitary gland gets degenerated, right? So degeneration of the pituitary gland is occurring during the pregnancy. That is known as Sheehan syndrome. It results in necrosis of the pituitary gland. So this is Sheehan syndrome. Postpartum necrosis of the anterior, and it occurs postpartum, not during delivery. Postpartum it occurring. That is what happens after delivery. She had postpartum hemorrhage, and in postpartum hemorrhage it lead to excessive blood loss that led to postpartum necrosis of the anterior pituitary. So anterior pituitary की necrosis होगी due to excessive blood loss postpartum hemorrhage की तरफ कारण. If we talk about the BMI, that is kg per meter square, underweight is less than 18.5, normal weight is 18.5 to 24.9. Overweight BMI is more than 25 and obese is more than 30. Weight gain is 12.5 to 18, 11.5 to 14, and 7 to 1.5, and less than 7. अगर हम BMI की बात करें, दैट इज़ kg per meter, तो अंडरवेट इज़ लेस देन 18.5. नो, आई डोंट थिंक सो इट्स इम्पॉर्टेंट. ऑल फ्लोटिंग फैक्टर्स जो से होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट द फैक्टर 11 and 13. सिर्फ जो से फैक्टर 11 और 13 होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं. फ्लूइड रिटेंशन जो सी प्रेगनेंसी में होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एंड ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है. सारे आयरन के पैरामीटर्स जो से हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है. यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज़ हो जाता है. प्लेटलेट डिक्रीज़ हो जाता है. बिनाइन जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है. And if we talk about the vagina, there is a Dordrein bacilli or lactobacilli which increases the vaginal acidity. Because of that, the pH decreases, and by decreasing the pH we are protecting the vagina and protecting any infection source. And further talking about the globulin, fibrinogen, and leukocytes, WBCs, transferrin, it is increasing. But if we talk about the albumin, it is decreasing. And if we talk about the platelets, it is decreasing. And acute fatty liver in pregnancy, if we're talking, then the bilirubin is less than 10 mg per deciliter. And if we're talking about idiopathic cholestatic jaundice, then the bilirubin is less than 5 mg per deciliter. If we are talking about the acute fatty liver in pregnancy, less than 10. If we're talking about cholestatic jaundice, then it is 5 mg per deciliter. And how are we going to diagnose a liver condition? By the bile acid test. Okay? And if there is any cholestasis of the pregnancy, cholestasis during pregnancy, the pregnancy should be terminated at 38 to 39 weeks of gestation. Acute fatty liver in pregnancy should be terminated immediately. Potassium, fat, and carbohydrate. Colostrum contains all in except. The colostrum is containing all in excess except
the KFC, that is potassium, fat and carbohydrate. Okay, colostrum contains all in except the KFC, that is potassium, fat and the carbohydrate. And we know that the diaphragm is elevated by the 4 cm during pregnancy. Transverse diameter increases by 2 cm. The circumference of the chest increases by 6 cm. If we are talking about the fibrin stabilizing factor, it decreases during the pregnancy. इंटरमीडिएट सेल्स ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे पेराबेसल सेल्स वो बाद में होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, पर अब ज़्यादा इंटरमीडिएट सेल्स आ जाते हैं वजाइना में. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. रिजर्व वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है, और एक और डिक्रीज़ होती है, रिजर्व वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है, और एक चीज़ बस रिजर्व वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है, और जो सी वाइटल कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम उनसे होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज़ होती है. ठीक है. एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इंक्रीज़ हो जाती है. अगर हम देखें थीकल लुटिनसिस की बात करें तो किस किस में फाउंड की जाती है ट्विन प्रेगनेंसी में, हाइपरथायरॉयडिज्म में और डायबिटीज़ में. अगर हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की बात करें तो दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी. हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम इज नॉट एसोसिएटेड विद पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी. Hyperemesis gravidarum is associated with multiple other factors like diabetes, a twin pregnancy, molar pregnancy, placentomegaly, taking drugs like marijuana. Then one more factor could be there, like it was no, I'm not able to recall it. If a female fetus is there, that leads to increase in estrogen. That is the cause of vomiting. And the second is hyperthyroidism. If thyroid is also there, that could also lead to hyperemesis. Okay. Now, if you're talking about the heart disease in pregnancy, what are the changes in the cardiovascular system in pregnancy? First of all, cardiac output, it increases. Stroke volume into heart rate. The main hormone is equal to progesterone. Cardiac output begins to increase. Five weeks maximum during pregnancy, that is 28 to 32 weeks, 40%. So CVS is also important in pregnancy, and we need to talk about it. Okay, let's just finish the topic. Yes, it decreases in colostrum. If you're talking about the cardiovascular system in pregnancy, it increases, cardiac output increases, that is stroke volume into heart rate.
If you're talking about the heart disease in pregnancy, cardiac output it increases during pregnancy, right? And stroke volume. As we know that the cardiac output is stroke volume into heart rate. So heart rate remains normal, but stroke volume is increasing. Begins to increase during the 5th week. जब वो 5 weeks की होगी तभी वो increase होना शुरू हो जाएगा. Begins to increase during the 5th weeks. And maximum in pregnancy 28 to 32 weeks. Overall maximum increase in cardiac output is immediate postpartum. Second stage of labor 2%. First stage of labor, last first stage of labor, 28 to 32 weeks of pregnancy. सबसे ज़्यादा कार्डिक आउटपुट कब होता है? इमीडिएट पोस्टमार्टम 70% कार्डिक आउटपुट होगा. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे होता है अराउंड 50% एंड उसके बाद फर्स्ट स्टेज पे थोड़ा कम होता है. उसके बाद 28 to 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. अगर हम करें कि सबसे ज़्यादा कार्डिक आउटपुट कब होता है? इमीडिएट पोस्टमार्टम. ठीक है. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे अराउंड 50% कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है. काफ़ी मतलब इंक्रीज़ होना तभी शुरू हो जाता है 5th वीक से. धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहता है. अब फिर और इंक्रीज़ हो गया 28 to 30 वीक्स. फिर आगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर उसमें 50% इंक्रीज़ हो गया. पर इमीडिएट पोस्टमार्टम 70% कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है. अगर हम बात करें तो मेन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन. हमें पता है वो इंक्रीज़ होता है. प्रोजेस्टेरोन पर क्या करता है? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है. उस वजह से क्या होता है कि जो उनसे रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो, चाहे वो पल्मोनरी रेजिस्टेंस हो, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो या पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो, वो वेसल्स की रेजिस्टेंस को कम कर देता है. उस वजह से क्या होता है कि जो उनसे सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है. एंड मेन आर्टीरियल प्रेशर जो उनसे होता है वो कम हो जाता है. ठीक है. पर मैंने तो सुना था कि बीपी इंक्रीज़ होना चाहिए. No, there is slight decrease in the BP. And maximum decrease in BP is diastolic BP. Maximum in second trimester in supine position. And then we have the supine hypertension syndrome that is occurring in the late 3rd trimester. Whenever you lie supine, that the gravid uterus presses on the IVC. You have inferior vena cava. The gravid uterus will press on the inferior vena cava. That will decrease your venous return to the heart, and the cardiac output will also decrease. So the mother will have a kind of hypertension, and the blood flow to the fetus will also decrease.
classification of the heart disease behind. So this is class 1 maternal mortality, class 2 maternal mortality, class 3 maternal mortality. Class 1 maternal mortality में होता है less than 1%, class 2 maternal mortality is 15 to 25%, and class C maternal mortality is 20 to 50%. All congenital heart diseases, pulmonary hypertension, primary and secondary, that is Eisenmenger syndrome, highest maternal mortality. Marfan syndrome with aortic involvement, cough tissue of the aorta. So this is classification of heart diseases, that is class 1, 2 and 3. Class 1, it leads to maternal mortality, and it contains all kind of congenital heart diseases. If we talk about class 2 is maternal mortality. क्लास 2 में होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी के चांसेस कौन से होते हैं. क्लास 1 में मैटरनल मोर्टेलिटी के चांसेस लेस देन 1%, क्लास 2 में 15 से 25%, एंड क्लास 3 में मैटरनल मोर्टेलिटी के चांसेस 25 से 50%. डिजीज़ की अगर हम बात करें, दिस इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजेनमेंगर सिंड्रोम, हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी. मार्फन सिंड्रोम विद एओर्टिक इन्वॉल्वमेंट, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा.
क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है क्लास 1, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी लेस देन 1 होती है। फिर आती है क्लास 2, जिसमें 15 से 20% होती है। और फिर आती है क्लास 3, जिसमें क्या होता है कि 25 से 50% होती है। डिजीज़ में जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम विद एओर्टिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एंड कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकती है। कौन से डिजीज़ में हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी होती है? हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी होती है in pulmonary hypertension, Eisenmenger syndrome. Eisenmenger syndrome is the one with the highest maternal mortality. Marfan syndrome with the aortic involvement, coarctation of aorta. Okay, so what are the diseases? That is pulmonary hypertension. If we have this, can be Eisenmenger syndrome, that is related with the highest maternal mortality. If you are having Marfan syndrome with aortic involvement, if you are having coarctation of aorta, then heart disease with the highest risk of maternal mortality are the Eisenmenger syndromes. Most common heart diseases that are associated with maternal mortality are, most common is mitral stenosis. But if they are asking about the highest risk of maternal mortality, that is in Eisenmenger syndrome. Then regurgitant lesions are tolerated better than the stenotic lesions. Heart diseases in with best prognosis are congenital heart diseases.
Heart disease in which pregnancy is containing all three. Heart disease belonging to class 3, ejection fraction is less than 30%. ओके कौन सी हार्ट डिजीज़ होती हैं जिनमें हम प्रेगनेंसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. इफ़ ए पेशेंट इज़ कमिंग टू मी राइट एंड it shows that she is having class 3 heart disease, so pregnancy is not for that lady. If ejection fraction is less than 30%, not for that lady. If she is having severe mitral stenosis, if she is having severe aortic stenosis, any heart disease which belong to NYHA class 3 and 4 is not for that patient. Okay, if ejection fraction is less than 30, if aortic stenosis severe or mitral stenosis severe, and NHAY class 3 and 4 and class 3 is there, so we'll not prefer the pregnancy and we'll say it is contraindicated. And if the lady is having congenital heart diseases, that is one with the best prognosis, because the maternal mortality is less than 1%. And most common is mitral stenosis, and highest risk of mortality is Eisenmenger syndrome. Then MTP in heart disease in patient, normally in India it is 20 weeks. In heart disease it is 12 weeks. Best method is suction evacuation. If you are doing MTP, India is 20 weeks, heart disease is 12 weeks, and best method is suction evacuation. How will you manage your patient who is having heart diseases during labor? First of all, the patient should be told to rest in left lateral position or proved up position. First of all, put the patient in the left lateral position or proved up position, and you should never do pervaginal examination, and fluid should also be not given. And the best mode of delivery would be vaginal delivery, and allow the patient to go into spontaneous labor, and do induction of labor if it is safe. And if you are going for vaginal delivery in the second stage of labor is more than 30 minutes, then you need to use prophylactic use of forceps or vacuum is done prophylactically, because you don't want to prolong the stage, because the patient is already having the heart disease. In normal conditions, the second stage is prolonged if it is nulliparous or it is multiparous. If the second stage is prolonged, that normally happens in nulliparous. If a first time pregnancy is occurring, then it might take more than 2 hours, and if it is multiparous, then 1 hour. But if you are going for vaginal delivery in the heart disease, prefer you going prophylactic use of forceps and vacuum we are doing. Earlier, heart disease forceps was preferred, now vacuum is preferred. Lithotomy position is not needed, we use the vacuum now. What are the indications of C-section in the heart disease? First of all, if aorta is involved, like aneurysm or stenosis or Marfan syndrome or coarctation of a recent MI or chronic heart disease was there, emergency valve replacement after delivery has to be done, and
if the patient has been fully coagulated on warfarin level within 2 weeks of labor, and anesthesia is epidural anesthesia. In which condition general anesthesia is used? Okay, so we are using in C-section the epidural anesthesia, but in certain conditions of the heart disease we are also using the general anesthesia. And what are those conditions? They are intracardiac shunt, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, that is HOCM. Intracardiac shunt, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, that is HOCM. Then we have the pulmonary hypertension. Then we have the severe aortic stenosis, severe aortic regurgitation. If we talk about the management of third stage of labor in heart disease, active management of third stage of labor, we will go for methyl ergometrin, give injection diuretics, antibody prophylaxis for infective endocarditis after vaginal delivery is not needed. If you're talking about the tubectomy, contraception which we should use, earlier it was barrier use, now we use the IUCD. And a permanent method, you should go for tubectomy. And tubectomy in heart disease, best after 6 weeks of delivery, and best is mini laparotomy, small incision under umbilicus under the local anesthesia. And laparoscopic sterilization is contraindicated. Okay, laparoscopic sterilization is not done. Best is by giving a small incision under the umbilicus under the local anesthesia. If we are having a mitral stenosis, then what is the if you have the mitral stenosis, what the best time to do the surgery? Surgery of choice is balloon valvuloplasty. Surgery which is contraindicated in pregnancy is valve replacement. We cannot do valve replacement during pregnancy. And surgery of choice in mitral stenosis, balloon valvuloplasty. Best time to do surgery, second trimester of the pregnancy. If you have to do surgery, you know that the patient is having mitral stenosis and she is pregnant, please do the surgery in the second trimester, that is around 14 to 8 weeks. But if you know that it has gone ahead, it is a very dangerous condition, and valve replacement is contraindicated in pregnancy. And what kind of surgery can you do? You can only do balloon valvuloplasty. You cannot do valve replacement. Okay, I'm done with the topic.